my dear students. We are studying chapter number 7, Getting to Know Plants. In the previous lecture, we have completed what we have done. We have done leaves and stem. So we have covered two parts of the shoot system. Now, the third part we will be studying today is actually flower. Now, in the garden, you must have seen different colors of flowers. Now, you will learn what is actually the significance of a flower in a plant. What is actually a flower? Flower is basically the reproductive part of a plant. Reproductive part of a plant is your flower. That means the flower has the capacity to reproduce. Exactly. So that is why it is said as the reproductive part of a plant. So if I talk about different parts of a flower, so there are four different parts of a flower. Number one is your petal. There are four different parts of a flower. Number one is your petal. So what is petal? Petal is actually the colored part of a flower. The part which is colored in a flower is actually your petal. Number two is your sepal. What is sepal? Sepal is actually the small leaf-like structure. The leaves that arises from the base of a flower, those are known as sepal. Number third part of a flower is your stamen. Stamen is actually the male part of a flower. Male part of a flower is your stamen. And stamen is also pollen producing part of a flower. Pollen producing part of a flower is your stamen. That means this stamen produces pollen grains. Which part produces pollen grain? The stamen produces pollen grain in a plant. And stamen is the male part of a flower. Then coming on to the pistil. Pistil is the female reproductive part of a flower. Pistil is what? It is the female reproductive part of a flower. Question comes, what is the male? Which is the male reproductive part of a flower? So you have to write stamen is the male reproductive part of a flower. If it is asked, which is the female reproductive part of a flower? So pistil is the female reproductive part of a flower. Now my dear students, do you know that stamen and pistil further has their own parts? So if I talk of stamen, stamen is having divided into two parts. Number one is your anther, number two is your filament. So anther and filament together comprises of stamen. Coming on to pistil. Pistil comprises of your stigma, style, ovary. Now you must have heard of the different words. Different words like petal, sepal, stamen, pistil, right? Stamen comprises of anther and filament. Pistil comprises of stigma, style and ovary. Let's see these parts of the flower in our actual flower diagram. Let's see. Now, my dear students, you can see these are actually the colored part of a flower. These colored part of a flower are actually your petals. These are actually your petals because these are actually the colored part of the flower. If the flower is of pink color, these petals will be of pink color. If the flower is of white color, these petals will be of white color. If the flower is of red color, these petals will be of red color. Now my dear students, petals is clear to you all? This is the colored part of a flower. As I have written over here, petals, colored part of flower. Now, coming on to sepals. Sepals is green-like structure. So, these are your sepals. Sepals, green-like structure, green leaf-like structure. So, these leaves are actually your sepals. I hope petals and sepals is clear to you all. Now, our third part is stamen. What is stamen? Which is the male part of a flower. If I talk of stamen, stamen comprises of your anther and filament. This long structure which is coming out of the ovary of this part, this
your filament. And this bulb-like structure at the top of this filament is your anther. So this anther and filament together is known as stamen. Again talking of father, stamen is clear, and stamen is the male part of a flower, male reproductive part of a flower, and stamen produces your pollen grains. Stamen produces pollen grains. Now coming on to the father part, pistil or carpel, this center part, center bulging structure which is at the center, this is known as your stigma. And the bottom elongated tube-like structure, this bottom elongated tube-like structure is your style. Number 3, the basal swollen part, जो सूजा हुआ पार्ट बोलेंगे और the basal बेस में जो swollen part है, that is known as your ovary. So stigma, style, ovary, together both all of these comprises of the pistil or carpel. Then stigma, style, ovary is your pistil and carpel. What else is left? All the parts are clear to you all. Petals, the colored part of a plant is your petals. The colored part of a flower is your petals. Coming on to the sepals, the leaf-like structure. Then this arising from this is the filament. This arising from the base or from the ovary is your filament. And at the top of it, this bulb-like structure is your anther. Anther and filament together comprises of stamen. And then the stigma, style, ovary together comprises of pistil or carpel. And this ovary comprises of ovules in it, a structure which is known as ovules. These ovules will actually fuse with pollen grains. This we will study further. I hope the diagram of a flower is clear to you all. Once again I will tell you, जो flower में color part होता है उसे हम petals बोलेंगे, और जो leaf like structure होता है, leaf arise होती है flower में, उसे हम बोलेंगे sepals. और जो हमारा bulging part है वो हो गया हमारा anther, उसके नीचे जो tube like structure जा रहा है that is our filament. anther और filament दोनों मिलके हम उनको बोलते हैं stamen. stamen के ही parts हैं. stamen हमारा male reproductive part है और stamen में ही हमारे pollen grains produce होते हैं. Then comes our stigma, जो top पर है swollen part. Then base elongated tube-like structure is your style. फिर उसके बाद जो swollen basal part है that is your ovary. stigma, style और ovary को हम बोलते हैं pistil या फिर carpel. और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये ओव्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं. आई होप द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर इज क्लियर टू यू ऑल. स्टेमन कंप्राइजिंग ऑफ anther and filament, pistil comprises of stigma, style, ovary, and petal, sepal, stamen, pistil. All are the 4 parts of a flower. I hope this concept is clear to you all. Now, my dear students, we are going to study a very interesting and a new concept, that is fertilization. You must not have studied in your junior classes about fertilization, but it's a very new concept to you people, that what is fertilization and how does fertilization occurs in plants. Okay? My dear students, fertilization is a process in which the male gamete, that is actually your pollen grain, जो male gamete है, pollen grain जो कौन produce कर रहा था? हमारा anther, वो किससे fuse हो जाता है? हमारे female gamete ovum या फिर egg से. अब होता क्या है? ये जो pollen grain है ये हमारा ovum से fuse होकर बनाता है zygote. अब ये जो zygote होता है वो फर्दर डेवलप करता है, डिवाइड करता है, फिर वो बनाता है एम्ब्रियो, एंड देन दैट एम्ब्रियो फर्दर कन्वर्ट्स इनटू अ फ्रूट जो हम खाते हैं. सो व्हाट इज द प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या है? जो मेल गेमीट, हमारा मेल गेमीट क्या है? पोलन ग्रेन, जो बनाता कौन है? हमारे एंथर. एंथर प्रोड्यूस करता है इस पोलन ग्रेन को, वो फ्यूज कर जाता है फीमेल गेमीट हमारा ओवम या फिर एग से, और क्या
zygote in a plant is known as your fertilization. मेन पर्पस क्या होता है फर्टिलाइजेशन का कि ग्रेजुअली फ्यूचर में वो zygote डेवलप हो जाएगा आपके फ्रूट में और वो फ्रूट आप खाएंगे. तो fertilization is a process in which your male gamete, that is pollen grain, fuses with the female gamete, that is your ova or egg, to form zygote. This is fertilization. अब ये प्रोसेस एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन का होता कैसे है? ये जो पॉलन ग्रेन है ये फीमेल गेमीट हमारे ओवम के पास कैसे आते हैं? तभी तो दोनों आएंगे, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा. तो बेटा होता क्या है, जो पॉलन ग्रेन है हमारे एंथर ने प्रोड्यूस करा किसको? पॉलन ग्रेन को. अब एंथर में जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ वो जाता है स्टिग्मा के पास. वो किसके पास जाता है? स्टिग्मा के पास. Because pollen grains are very light, बहुत ही लाइट होते हैं pollen grains. तो वो लाइट वेटेड होते हैं. तो कैसे ट्रांसफर होंगे? बाय विंड. या तो कोई हवा से उड़कर जा सकते हैं बाय विंड, या फिर कोई इंसेक्ट लेके जा सकता है, या फिर कोई हनी बीज वगैरह. anyone can do it. So pollen grain में क्या होता है? Any insect can do it. Anyone can do it. Any insect can do it. Pollen grain produced by the anther. It is transferred to stigma with the help of either wind or you can say insects, and then travel down through style and then reaches ovary. When ovary it fuses with the ovules and gradually it forms seed. अब जो ओवरी होती है आउटर कवरिंग, फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे बना लेती है? फ्रूट बना लेती है. अच्छा, अब लेट्स अंडरस्टैंड इट ओवर हियर. होता क्या है, ये जो एंथर है, ये एंथर है, इसने क्या प्रोड्यूस करा? इसने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करा. क्या प्रोड्यूस करा? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करा. अब वो पोलन ग्रेन बहुत लाइट इन वेट है, तो वो पोलन ग्रेन क्या करेगा? ट्रांसफर हो जाएगा आइदर बाय विंड और बाय इंसेक्ट टू दिस स्टिग्मा. स्टिग्मा का जो ऊपर वाली कवरिंग होती है ना बहुत ही स्टिकी होती है, तो पोलन ग्रेन को यहाँ पर अटैच कर लेंगे. अब पोलन ग्रेन अंदर जाएगा, इस ट्यूब से अंदर जाएगा, इस ट्यूब से अंदर जाएगा स्टाइल में. अब स्टाइल में अंदर जाने के बाद यहाँ ओवरी से नीचे से यहाँ से एंटर करेगा. पोलन ग्रेन विल एंटर इनसाइड, ओव्यूल्स के साथ यहाँ पर फ्यूज करेगा, देन ग्रेजुअली इट विल फॉर्म सीड. और ये जो बेसल ओवरी है ये स्वेल अप होगी और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी. दिस इज हाउ फर्टिलाइजेशन अकर. होता क्या है, एंथर से पोलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे गया, स्टिग्मा पे जैसे ही जाएगा नीचे पोलन ट्यूब बन जाएगी, वो स्टाइल से होता होता नीचे ओवरी में जाएगा. ओवरी में जाते ही वो ओव्यूल्स के साथ फ्यूज हो जाएगा या फिर मिल जाएगा, फिर वो जाइगोट बनाएगा, फिर वो एम्ब्रियो बनाएगा, फिर फादर ऑन सीड्स में कन्वर्जन होगा. सीड्स में कन्वर्जन होने के बाद जो हमारी बेसल ओवरी है वो स्वेल अप होगी और ज्यादा, और फ्रूट में हमारे कन्वर्ट हो जाएगी. दिस इज हाउ फर्टिलाइजेशन इज. फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ मेल gamete pollen grain with female gamete ova to form zygote or the conversion into embryo, and then finally we get the end product, that is the fruit. Pollen